Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about head of accounts in the previous lesson. Here is the summary of the last lesson. We talked about assets and liabilities in the previous lecture. Assets are the financial resources held by a business, and we talk about that assets can be grouped into tangible assets and intangible assets. Tangible assets are the assets which have physical existence, like building or furniture and the things like that. And intangible assets are the assets which don't have a physical existence, but at least they have a monetary value. For example, trade receivables, accounts receivables, patents, goodwill, etc. Similarly, we talk about that the assets can be grouped into current and fixed assets as well. Current assets are the assets which are usually used within one accounting period, and fixed assets are the assets which last for more than one accounting period. And similarly, we talk about the liabilities, the second head of account. Liabilities are the financial obligations of a business which a business have to pay to the external parties. Liabilities can also be divided into current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are the liabilities which are usually a business have to pay within one accounting period, and non-current liabilities are the liabilities which are to be paid back after 1 years, more than one years. Today we will continue discussing head of accounts from the equity. Equity is the net amount of funds invested in a business by its owners plus any retained earning. It is also calculated as the difference between total of all recorded assets and liabilities of the business. In simple words, equity is that portion of total assets of the company that the owner fully owns. हम कह सकते हैं कि इक्विटी बेसिकली वो कैपिटल है, वो अमाउंट है जो कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है, और ये नेट डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का. फॉर एग्जांपल, if you purchase a $30,000 worth vehicle and with a 25,000 loan and 5,000 payment in cash, then in this case you have acquired an asset of 30,000, but only there is a $5,000 of the equity. अगर $30,000 की एक व्हीकल परचेज की जाए और इन 30,000 में से 25,000 लोन लिया जाए और 5,000 अपनी जेब से इन्वेस्ट किया जाए, तो इस केस के अंदर सिर्फ 5,000 हमारी इक्विटी होगी, क्योंकि इसमें बेसिकली इस एसेट के अंदर सिर्फ 5,000 वो अमाउंट है कि जो कि हमने अपनी पॉकेट से पे की है, बाकी 25,000 लोन है और दैट इज़ टू बी पेड बैक. वेरियस नेम्स ऑफ द इक्विटी. डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर हम इक्विटी को डिफरेंट नेम्स के साथ पुकारते हैं. तीन बड़े जो टाइप ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर. सोल ट्रेडरशिप उसमें मौजूद है, पार्टनरशिप है और जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं. इन सोल ट्रेडरशिप इक्विटी इज़ नोन एज द ओनर्स इन्वेस्टमेंट और ओनर्स कैपिटल. हम सोल ट्रेडरशिप के अंदर जो अब हमारी इक्विटी है उसको हम ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इन्वेस्टमेंट के नाम से पुकारते हैं. In case of partnership, equity is named as partners contribution और partners capital contribution. पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनर्स की जो जितनी अमाउंट एक पार्टनर ने उसमें कंट्रीब्यूट की है वो पार्टनर की कंट्रीब्यूशन कहलाती है. इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इक्विटी इज़ नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी और पेड इन कैपिटल. इसमें लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कैपिटल के अंदर, तो इसलिए इसको शेयर होल्डर्स कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी के नाम से पुकारा जाता है. नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट इज इनकम, sometimes called revenue as well. Income is the money the business earns from selling a product or a service, or from the interest and dividends on marketable securities. Other names of income are revenue, gross income and turnover. Income या revenue
जो है ये किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन के नतीजे में जो कुछ भी अर्निंग होती है, हम कोई भी चीज़ सेल आउट करते हैं, गुड्स हों या सर्विसेज हों, तो उसके बदले में जो अमाउंट भी हमें रिसीव होती है उसको इनकम या रेवेन्यू कहा जाता है। Income accounts are temporary accounts or nominal accounts because their balance is reset to zero at the beginning of each new accounting period. हर साल ये अकाउंट जो आपके इनकम अकाउंट्स हैं इनको हम टेम्परेरी अकाउंट्स कहते हैं या नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि हर साल इनकम अकाउंट्स या रेवेन्यू अकाउंट्स जो हैं उनका बैलेंस ज़ीरो पे सेट करके नए सिरे से ज़ीरो बैलेंस के साथ स्टार्ट किया जाता है नया अकाउंटिंग पीरियड। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट यूज्ड बाय ए कंपनी इन इट्स ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस द रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस आर बेसिकली द कॉस्ट इंकर्ड टू जनरेट रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस। हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस वो तमाम खर्चे, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं उनको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस जो होता है ये यूजुअली इसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक महदूद होता है। एग्जांपल्स ऑफ द एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस सप्लाईज, यूटिलिटी बिल्स, रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड लाइक दैट। इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं। हम जो रेंट पे करते हैं यूजुअली एक अगर महीने का हमने रेंट पे किया है तो वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेट कर रहा है, उस महीने के बाद वो रेंट की जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह यूटिलिटी बिल्स हैं, बिल्स भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पे किए जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक्सपेंसेस जो हैं इनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो रह गए थे हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स लास्ट लेसन में। टोटल हमने कहा कि 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो कि इन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स से बाहर हो। तो हम फर्दर जितनी भी स्टडी करेंगे उनमें हर जगह पे हमें नज़र आएगा कि ये हेड ऑफ अकाउंट्स जो हैं ये हमारे अकाउंटिंग सारी की सारी इन्हीं की रिवॉल्व करती रहेगी, इन्हीं के राउंड अबाउट।